First of all, I talk about the hatching. Rectangle command I take here. Okay. Then make a first corner and then use a dimension 100 by 50. Okay, this is your rectangle, right? And मैं पहले जो command की बात कर रहा हूँ, this is called hatching, right? For hatching, we write here as hatch enter. Okay, hatch enter is shortcut for the hatch. Okay, click on hatch enter. What will you go here? Here you get the hatching creation option. Okay, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? Hatching creation options मिल जाएंगे. ठीक है, अभी मैं हैचिंग करनी है, अभी करके दिखाऊंगा फिर. Okay. Here we talk about the hatching. Hatching shortcut is hatch. Shortcut is your hatch. Okay. Why we use the hatching? For showing solid face, solid type of faces in 2D drawing. Okay. तो आप 2D drawing में solid face जो show करते हो, this is called hatching, right? Okay. We have three types of hatching. First one is your pattern hatching. Okay. We use pattern hatching. Then one is solid hatching. And third one is your gradient hatching. Okay. We use three types of hatching. Right? Solid hatching, pattern hatching, and gradient hatching, right? Right. What's the hatching is? Suppose here we have to show this drawing, and then I want to show this drawing in form of solid faces. This is look like a solid, and then if I use this here, and then copy is pass, and then use there, and then here I make a circle. Circle is denoted as a hole, right? Circle is denoted as a hole, and then I want to show his face is your solid. For this purpose, we use hatching. Hatch enter. For hatching, shortcut key is hatch, and then also we have the option of the hatching here. Okay, in the your draw tools. Okay, when you have a draw tools, and then inside your draw tools, we have the hatching option, and then so use a shortcut key also hatch enter. Okay, but you use hatch enter. Hatch enter we can use here, and then if you apply here, click on it. Then what will go here? Here you got the hatching. Which type of hatching you want? Just click on it. Okay. This is NC1T1. Okay, if you have a mechanical issue, mostly this type of hatching is used, NC1T1. If you have a civil options, then we have the multiple option right here. Just talk about this option also. This is hatching where you apply. One thing is remember, hatching only apply on your closed shape, right? One thing remember, if you can make the line by use of this way, okay, suppose I make it control, and then here I make it and and C enter for close line. And then I want to apply the hatching. This is my line. Okay, simple line, not the close shape, right? Then I want to apply a hatching. Then what you do, just use a hatch enter and just click on it. Okay, this hatching will be applied, right? If my object is open, suppose I create object in this way, I'll enter. Okay, and suppose I create it here. Okay, and this will be create right here. Okay, and then I create. Okay, then if you show this here, it don't look like a open, right? This will look like a open, but this is will be open. See that? Okay. If you want to apply, here is a hatching. Your hatching will be not applied. If you know hatching is not applied, just suppose your object will be open anywhere. Okay. When we click on it, the this message will appear a closed boundary in your case. So okay. What's the message will appear if you show that? Okay. If you click on this path, hatch enter, hatching for hatch enter, and then uses hatching, then here we have to this type of error, hatching boundary definition error.
A close boundary cannot be determined, मतलब आपको क्लोज बाउंड्री नहीं मिली तो इसने हैचिंग नहीं किया। एंड इसने आपको पॉइंट आउट भी कर दिया कि हाँ यहाँ पे आपकी जो है बाउंड्री क्लोज नहीं है, तो इसे पहले क्या करो, क्लोज करो। तो ध्यान रखना हैचिंग तभी आपका काम वर्क करेगा जब वही शेप क्लोज हो, ओपन शेप में हैचिंग काम का नहीं है, राइट। Always hatching will be you apply on the closed shape, not the open shape. Clear? अब काम अब बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज योर, हमने सर्कल यूज किया, सी एंटर फॉर द सर्कल। दिस इज माय सर्कल, राइट, एंड दिस इज माय रेक्टेंगल, राइट। ओके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग आई वांट टू टॉक हियर। ओके, अभी तक हमें समझ में हैचिंग हमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई होगा, लूज शेप में अप्लाई होगा। ओके, अब अलग अलग टाइप्स के हैचिंग में यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, कम टू दिस पार्ट हियर। अब सपोज मुझे यहाँ पे लगानी है पैटर्न हैचिंग। क्या लगानी है? पैटर्न हैचिंग। तो एच एंटर करो, हैचिंग के लिए एच एंटर। एंड देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ द पैटर्न। यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? जस्ट सेलेक्ट योर पैटर्न। Okay, this is your pattern hatching. And then what's the pattern is this? This is color pattern hatching. This is called, we where we define here is a color pattern hatching. NC1T1, NC1T2, and mechanical Austrian mostly uses NC1T1. If you use other patterns, just click on this part. We have the multiple option of this part. Okay, if you want to apply the big type hatching, okay, for showing your walls and then anything, then you can use the big type hatching. If you in the NC1T, if you want to show your base point, suppose you show the many of things are right here. If you show the concrete, okay, wall, then you can use a concrete type. Okay, if many of the types of the hatching are there, so, okay, sand type, box type, okay, back, big, many of the hatching you can use here. For apply clay, if you use a clay, if you need any parts, then you can use a clay type. I think dash dotted line earth option. Okay, I think you can show the earthing option. Then you can show the base of the earth. Then you can use the earth option. Okay, and then also for the glass, this hatching is mainly used for the apply for the glass. And then click on here. Then here we can apply for this glass. Okay, this is my see. This is a symbol for the showing the glass. Okay, if you show the glass, then you can use this glass right here. Okay, and then if you show editing, and this will be shown. Okay, if you apply a hedge such again hedging, whatever you option you will be selected, your hedging will be applied right here. Right, this is your symbols, this is your patterns, and in each and every pattern you which patterns you want you can use it, right? That's clear. And inside the pattern we have something. For this part is, suppose you can want to change this color of the pattern, just click on this part, and which pattern you selected here, which this pattern color will be changed. I've not selected this pattern, that this color will be not changed. I selected this pattern, that this pattern value is selected. Also you can use here is your the fill color. Fill color in the sense you can solid colors you can specify, but in this pattern hatching we don't use a solid colors, right? So that's why you can use a none, right? And then this is your hatching transparency. For you can apply the transparent hatching, then you can click on it part, and this is your hatching transparency will be used. And this will be angle, change the angle. Here this line will be tilted with the 45 degree angle. Okay, if you want to change this angle, then just change this angle in any direction. Okay, you can also change this angle. Okay, and then if you have this data, suppose you have this, and then if you want to create a big circle, big data, right? I close it first. And if I want to create, here is a big data. Suppose here, this is my size, because each and every size are vary, right? That's why, okay, if you apply the big size of the hatchet, then you can click on here. Then what you say here, sometimes you look like as a fill color, single color. What's here, I use a pattern hatching. How to define the pattern hatching? This big object, because you have to make small object, big object, anything. For this part, you can use a scale. Okay, suppose I use a scale straight. Then once you goes here, the space distance between here is in scale is increases, okay, and your distance will be increased, right? If you have the small object, then your scale will be decreased, and if you have the large object, the scale will be increased, right? Clear? By this way, you can scale this object or not. That's clear to you, all of you? Close this heading. This is your heading.
Come to the next part of the hatching is the hatch enter, and then select here. Is your next part is your pattern to the solid. Okay. In the solid phase, what you have here, we have color. Okay. If you want to show anything by use of the color, then you use a solid hatching. Okay. You can specify any points, anything, any here, any pass by further of the color, because some things marking, use the marking option will be used by the color. You can also use the color option. Okay. If you click here, then you will, this color will be pairs, this color will be pairs. Okay. For marking and specify your object by use of color, then you can use the solid hatching. Inside the solid hatching, we have the color option. Okay. If you have want to more color, just click on more color also. We have two multiple colors are there. Okay. Not need to be index color. We have two colors. Color book we have. Okay. Color book we have many of the colors are there. Not need to be worry about it. Color most of many of the colors will be have happened here. Okay. You select your colors. And then also you can apply the transparency. Okay. And then you don't need to apply the angle, scale, anything inside this because this is a solid hatching. Okay. Clear? Simple. This is my solid hatching. Come to the next part is here. Next one is your gradient netting. What's the gradient? Anyone knows the gradient? What is the gradient? किसको पता है gradient क्या होता है? किसी ने कलर्स के बारे में पढ़े? किसको कुछ कलर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी? जिसको कलर्स के बारे में नॉलेज होगी वो जरूर ग्रेडियंट्स को जरूर जानता हो. Gradient is just a mixture of two colors, two and more colors. This is a mixture of two and more colors, but inside this part we have the only two colors option. Okay, not a two, three, four, five colors. Okay, but this is mixture of two colors. So you can select one color and then second color, and right here is the second color, and then this is your mixer. If you want to apply this part, then this color will be made. Okay, here we have the mixture of two colors, one and two. Okay, whatever you want, just click on it. Okay, and this is a mix of two colors. If you want here, then click here. Okay, add enter, and then which one is have this part? When we select here, now here is a solid. If I want to get it, and then here we write here is a gradient. We have the multiple type of gradient option also. Here we have the gradient linear, gradient saline, gradient gradient, and any one you can select here. Gradient the sphere, any types of the gradient you can select here. Okay, we have the multiple option for the gradient also, and inside the gradient we have option of the transparency option also, and then of the angle option. Okay, angle is so for the flow of the gradient bed colors. Okay, change the angle of the flow of the gradient bed. This is used for the many of the parts. Okay, and T's and setting is used for the dark and lighter colors for yourself, but this is not necessary for this part. Okay, that's clear. Okay. Next thing is yours. If you apply the hatching here, then I want to remove this hatching. Then how can we remove this hatching? If you click again, then your hatching casing again open. And I want to remove it, then we have the option of the remove also. Just click on the remove option and then click on border of this line. Okay, and then hit the enter. Then what will go here? Your hatching will be removed. Because you can also do that. So select the hatching and delete it. Then you can hatching is again be removed. And if you want to directly remove it, then you can have the option of the remove command also. Okay. Delete, you select hatching and delete it also. And then if you want to remove by use of the remove command also. Okay. Both the option you can use it for the delete and remove it option. Yes, clear? Up next one is use. I want to apply same type of hatching inside this and inside this object. Then how can we do that? For one thing we do, first of all, go to the hatching layer. Right here is the NC131 hatching and then change this color. Okay. We move these steps. Then one thing I do for this purpose, hatch enter, and then we have the option of the match properties also option. Select the match properties here. Select which one is want to do. Select it and then where you want to paste. Then same type of hatching, same scaling, same thing will be applied inside each and every object. Okay, where you want to match this part. Okay, you can also use the match hatching for the matching the hatching. That's clear. All. That's clear, all of you. How to apply the hatching and then how to remove the hatching, and how to use the hatching. Why we use the hatching. Okay. Next one is yours. Come to the next part is any doubts from the hatching? Any question regarding hatching?
नो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. Okay, next one. I come to the next part is yours. Is isometric drawing. Okay. What is the isometric drawing? Anyone knows how what is the isometric drawing? And for mechanical student, this is important to you for the isometric drawing. Okay. सर किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D पे शो करवाना। 3D ऑब्जेक्ट को 2D में शो कराना. जी। Okay. Right. So make a 2D drawing showing as like a 3D. Okay. Make a 2D drawing showing as like a 3D drawing is called isometric drawing. It's called isometric drawing. Right? मैं क्या करूंगा, 2D ही ड्राइंग बनाऊंगा, ना कि 3D, मगर लुक लाइक एज अ 3D. This is called isometric drawing. Okay? And this surface for doing the isometric drawing, for isometric drawing, use isodraft option for doing a use isometric the isodraft option. And this isodraft we have the three options: left, top, and right. Okay. For switching, isoplane. This is my isoplanes. Then use F5. Okay. F5 is shortcut key for switching isoplane. Okay. And for isometric drawing, we use line or polyline command for making drawing. Okay. तो यहाँ पे हम line और polyline command का यूज करेंगे mostly. Okay. And for creating circle, we use iso circle. Okay. अब आइसो सर्कल कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इसके ऑप्शन मिलेगा ईएल के अंदर. ईएल एंटर, देन आई एंटर. ठीक है. देन क्रिएट योर आइसो सर्कल. राइट. ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया. अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ठीक है. पहले तो हम समझते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है. जैसे कि मैंने बोला कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज यूज मेक अ 2D ड्राइंग शोइंग इज लाइक अ 3D ड्राइंग. मैं 2D ड्राइंग बनाता हूँ जो 3D ड्राइंग की तरह दिखे. दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक ड्राइंग. अब जैसे कि मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, ये चीज आपने बचपन से करी है. ओके. और मैं से इसी ही कॉपी किया. आई यूज दिस कॉपी एंड देन यूज दिस एंड देन आई मेक इट. ये सिंपल सा चीज है जो आप बचपन में बहुत लोग करते आए हैं. मैं तो बहुत करता था और मुझे नहीं पता था यहाँ पे आके कितना काम आएगा. ठीक है. तो बनाया ये चीजें अपने नोटबुक में बॉक्स टाइप से, और लिखता था ये 3D में बना दिया हमने. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोमेट्रिक के अंदर क्या दिखा है, इसके अंदर तीन फेसेस दिखे. राइट. बॉक्स दिखा आपको. क्या दिखा, तीन फेसेस. ये सिंपल सा है जो आप बचपन से करते हैं, बहुत लोग करते हैं. ओके. जो ये नहीं कि हर किसी ने की हो. आई थिंक किसी ने की भी हो सकती है, किसी ने नहीं भी की होगी. ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी ने की है, मगर मैंने तो बहुत की है. ठीक है. तो ये टॉप फेस हो गया हमारे लिए. ये टॉप फेस शो कर रहा है. राइट. ये हमें क्या शो कर रहा है, राइट. राइट फेस. ओके. और ये फेस क्या शो कर रहा है हमारे लिए, लेफ्ट फेस. ठीक है. ये है क्या मेरे पास, दिस इज माई 3D ड्राइंग. दिस इज नॉट अ 2D ड्राइंग. क्या है हमारे लिए,
दिस इज 3D, 3D नहीं है, सॉरी, इट इज ए 2D ड्राइंग, नॉट अ 3D ड्राइंग, मगर लुक लाइक व्यू लाइक एज अ 3D, क्योंकि तीन साइड की व्यू आपको यहाँ पे नजर आते हैं. सो द थ्री साइड ऑफ व्यू, टॉप, लेफ्ट एंड राइट. दैट्स क्लियर. What is a isometric drawing? This is just make to explain what is a isometric drawing. Okay. और ये सबसे आसान तरीका है isometric drawing को explain करने का. Okay. क्योंकि ये चीजें सभी ने यूज किया कहीं ना कहीं. अब come to this part to how to make a isometric drawing to yourself. Okay. So by use of isodraft and anything. Okay. If you want to do this, you can also take this screenshot. अगर आप चाहते हो तो इसका screenshot ले सकते हो. Just take this screenshot for your clarification. Okay. ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? नो. ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आगे चलना है. ओके, ये तो था हमने जो कि किसकी मदद से बनाया, सिंपल तरीके से बनाया. अब आइसो ड्राफ्टिंग के लिए आपके पास जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे मिलता है आइसो ड्राफ्ट का. अगर यहाँ ना मिले तो आप क्लिक करना, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन वी हैव द आइसो ड्राफ्ट ऑप्शन. ओके, वेयर यू हैव द आइसो ड्राफ्ट, यस यू हैव आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग. ओके, जस्ट चेक दिस आउट एंड देन क्लिक ऑन दिस पार्ट. ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी देखोगे फेस चेंज हो गया, ग्रेड फॉर्म चेंज हो गया, राइट. गेट फॉर्म चेंज हो गया एंड देन यहाँ से मैं आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप एंड आइसोप्लेन राइट इस तरह से सेट कर सकता हूँ, राइट. तो ये मैंने अलग अलग आइसोप्लेन पे चीजें बनाई एंड सेम चीज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पर्पस वी यूज ओनली लाइन्स. रेक्टेंगल से आप यहाँ पे आइसोप्लेन के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कोशिश भी मत करना, नहीं दिखेगा. okay? So you can't use the rectangle, circle, anything right here. Okay. First you do just use the L enter first and then select any object. And then you remember that all the line of the angle is on 30 degree. Tilted with 30 degree, not a 0 degree. तो यहाँ पे आप 0 degree पे से tilt नहीं करोगे, ये 30 degree पे ही tilted रहेगा. Right? And the right here is your distance. Suppose I take here is 100. Right? And then here I want to take 30 degree tilted option. And then here right here is 100 again. And I write here is your 150 and then there you write 100 again and then just close it here. Okay. And then goes upward and then right here is your 100 and goes here. And yeah, remember that always this is when on 30 degree, not other. Okay. It's 100. And then I use it here is your, again, you right here is this part and then I use outer space is 100. And I make here is 100 also. And make this part is 100. Okay, and then I close this portion and then I also close this portion. This point to this point I make here, and then this point to this point I want to make here. Okay, and one thing we do, I don't want to show back side of this tray. Then what you do, just use a 3R enter for trim and click here and this portion and this portion, and this will be your show as a cube, and these three faces will be show, top face. Okay, left face and right face, wherever you want to face here. Okay, this is your face. Okay, and then remember that isometric line tilted with 30 degree. Okay, 30 degree angle. Okay, this is always tilted with 30 degree angle. Okay, this is your way you can create here. Okay, अब मुझे next question is yours, how to create the circle inside in each and every faces. मुझे अगर यहाँ पे hole show करना है या circle show करना है तो मैं कैसे बनाऊँ? If you use a C enter, okay, suppose मैंने यहाँ पे एक line draw कर दी for finding out is your center point. Okay? तो मुझे यहाँ से center point मिल जाए तो मैंने यहाँ पे एक reference line बना दी, right? And then I want to show the circle here. तो मैंने C enter किया. सी एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनना है, जो दिस इज नॉट लाइक लुक लाइक अ परफेक्ट सर्कल.
Then how can we create your circle? Okay. So one thing you can do, first of all, change the face. Which face you want to make the circle is your top face. Then how can we change the face? By use of shortcut keys F5. Okay. मैंने क्या ले लिया टॉप फेस का यहाँ पे प्लेन ले लिया राइट आइसो प्लेन टॉप and I want to create the circle in top section. Then what you do, just EL enter first for ellipse command. Okay, and then inside the ellipse we have the one thing also is iso circle. Remember that iso circle always appear when you have to be on iso drafting mode. If you not you are on the iso drafting mode, then just I off this thing, and then we can use the EL enter. Okay, right here is the EL, and then I don't find out the iso circle here. We only find out the iso circle when we are on the mode of the iso draft. Okay, isometric drafting. Okay, to come this part, first of all select the iso drafting first, and then here use the EL, and then right here EL enter, and then select which one is your iso circle. So I enter for the iso circle. Okay, and then select your center point and click here, and then here we can create your distance, and then right here is a diameter, radius, whatever. If you diameter want to write the enter for diameter, and then for the radius I write here the 25 radius. Then this is my radius. That's clear? समझ में? तो ये isometric drafting का radius है, right? Let it. Then again we use a line command here. This point to is this point, right? And then here we put here to this point, this center point to this center point, right? And I want to make this also here. Then I switch the face to right to for the right direction. Just use the EL enter and then I enter and select the center and then make it as a 25. Okay. And then again I change the face first and then EL enter first and then I enter for the iso circle and make it in this formation. Okay. This is your iso circle and it is 25 radius. Okay. Clear? अब मैं इसका रेफरेंस जो लाइन मैंने बनाया वो सब डिलीट कर देता हूँ जस्ट डिलीट इट and then here we got this type of thing. That's clear to all of you? Okay, one thing I want to do also here. Okay. So I want to make here is a pipe. मुझे यहाँ पे एक पाइप से दिखाना है. Suppose I want to show the chimney. Okay, मुझे chimney type से चीज दिखानी है. तो how can we do that? For this purpose, we use some command. Okay. So how to use this command? Suppose first of all, he use so it's the face first is F5 so okay. So it's the face first is top face. Okay, because I want to show the chimney on the top side, and then use a copy command. Right. I copy this circle, enter, and I select the center point. And remember that this is your straight line. Okay. How this to take? I take 100 distance, right? And then I want to show the chimney type. Those this does not look like a chimney type. Then what you do, just use a right here, and then show the quadrant here. This is your quadrant point. Select the quadrant and then match the quadrant to quadrant. Okay. Then again, select the quadrant, not the tangent. Select your quadrant only. Okay. And after that, remove the back side faces. Those you don't want to show. To this, I back side these faces and trim it. And then this will be look like as your chimney and then any pipe. Okay. And this is your 3D face. So not your, this is your drawing. This is called isometric drawing, right? If you want to make this same thing inside this part and this part also, I can also make this part also. Okay. Just use this part and then see you enter for the copy. Select this copy, enter. And then select the center point and then remember that this is straight to this part. Right here is 80. Select L, enter. Select your quadrant to quadrant. Okay. And then again, select here is a quadrant to quadrant, not the tangent here. Okay. And then what you do, just right here is and trim is those parts don't want to see here. And then I can make this type of thing also. Okay. Again, if you want to show there is other way. Suppose CO enter first. Select this option also, and then I want to make this V. And then this size will be used I50, only 50 distance. And then I want to make here is a line is quadrant to quadrant. Select your quadrant point and then select to make the mesh the quadrant to quadrant line. And then again select the quadrant and then make this quadrant to quadrant. Okay, this quadrant to quadrant. And after that, right here is a trim. Select a trim, and then use as a trim, and trim at this point also, and trim this. Okay. By this way, you can create this type of thing. Okay.
जस्ट क्लियर ऑल ऑफ यू हाउ टू क्रिएट दिस थिंग? आप लोग आप कैसे इस तरह की चीजें को बनाओगे? ओके, जस्ट क्लियर ऑल ऑफ यू राइट हियर। गुड। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज ये। मैं अब कुछ ड्राइंग्स हम देख लेते हैं, ठीक है? बिना ड्राइंग्स का आपको समझ में भी नहीं आएगा, राइट? तो कम जिस पास मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग थोड़ा सर्च कर लेता हूँ। ओके, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सर्च कर लेता हूँ, आई थी। ओके, एंड कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग है आपके पास, देख सकते हो ये काफी सारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग है आपके पास। रिमेंबर दैट, आपको कोई भी चीज बनानी हो, कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, इसके लिए आपके पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो हम कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे मैं आपको कुछ चीजें और भी क्लियर कर देता हूँ। नोट हियर, नोट हियर। एक तो ये वाला आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है? इसमें मुझे बस ये इमेज थोड़ा सा अच्छा से लुक नहीं हुआ है मुझे, अभी जो हम एडिट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप इंटरनेट से निकाल लेना आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जिसके पास वर्कबुक है, जिसके पास वर्कबुक है उसके मैकेनिकल वाले वर्कबुक है, उसमें काफी सारे एग्जांपल्स है पहले से, तो वो एग्जांपल्स करो। जिसके पास मैकेनिकल वाली वर्कबुक नहीं है, तो उनके पास है ना ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के कोई भी एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, तो वो लोग आप यहाँ पे चले जाओ। ओके, जैसे कि जो इंटेंसिव वाले उनके पास बिल्कुल ही नहीं होंगे ये सीधे। ओके, आई मेक यूज ऑफ दिस पार्ट। हाँ ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा सही है बस, तो सही है अरे। हाँ, ये तो लोड कर दिया है इसी से। 20 मीटर, ठीक है। अब ये जैसे कि मेरे पास ये साइज है, ओके, कॉपी इमेज में देखिए, एंड देन आई पेस्ट हियर, एंड देन आई पेस्ट दिस पार्ट। ओके, अब मुझे इसी इमेज के रेफरेंस लेके मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। ये वाला पार्ट बनाऊंगा, ये वाला पार्ट तो मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया है, ठीक है? चलो ये कैसे बनाएंगे अब, तो यही देख लेते हैं सबसे पहले जो मिल गया हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, तो एल एंटर करो। ओके, एल एंटर फर्स्ट, and then click on this path, and this line has distance is 50, right? Okay, and this distance your कितनी है इसकी डिस्टेंस? इसकी डिस्टेंस है 20। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो 20 दे देते हैं, एंड देन हियर आई वांट टू डिस्टेंस 30 डिग्री का लूंगी चलना, एंड दिस डिस्टेंस योर अगेन 50। ओके, 50 by 50 का ही साइज, एंड देन इधर लाइन सिर्फ है ना 60 की, and I want to descend is 20, and then I want to show this here, this. Okay. And next one I want to do here is your this part. Okay. And then this distance will be yours 10. Okay. I think I look make here is wrong, because this distance will be 10. One second. मैं इसे छोटा ही कर देता हूँ ताकि मुझे बिल्कुल दिखे अच्छे से। ओके, अब चलो, अब दिखेगा बढ़िया से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया, एंड देन हियर वी शो हैज 50। ओके, मैं 50 दे रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एंड देन मैं इसके अंदर वापस इधर जाता हूँ, एंड देन इसकी डिस्टेंस भी मेरे पास 50, एंड देन क्लिक ऑन इट अप साइड, एंड देन डिस्टेंस इज चेंज। ओके, आफ्टर दैट यू कैन क्लिक हियर इज योर अगेन इज योर 50 डिस्टेंस। ओके, तो आप 50 दोगे यहाँ पे, एंड देन अगेन हियर मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, 40 होगी, क्योंकि 10 से माइनस हो जाएगा, राइट? Okay, and then this distance again you 50, and I make this match this point. Okay, after this match this point also, ठीक है? तो मैं इसके बाद इसको लेता हूँ, and then this is distance your 60, right? And then here this distance your 50, and this distance your again this distance your 10, this distance your 10, and this distance your 50. Okay, and this distance your whatever you have this line, and then I close this point to this, and then I close this point to this. I make this line. Okay. अब यहाँ तक मैंने बना लिया जैसे ये। ओके, अब मुझे सर्कल भी बनाना पता है मुझे कैसे बनाना, तो आई यूज हियर। ओके, तो मैं लाइन कमांड तो नहीं ले रहा यहाँ पे, सर्कल कमांड ले लेता हूँ। आइसो सर्कल, ई एल एंटर फर्स्ट, एंड देन आई एंटर फॉर आइसो सर्कल, एंड देन आई वांट टू मेक द टॉप सर्कल फर्स्ट। देन हाउ कैन वी मेक इट? By the reference guidance, I can use center to center, and then this will be my center point, right?
तो यहाँ से मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया एंड एक सर्कल बनाना जिसकी रेडियस है 50। राइट। अब नेक्स्ट वन आई यूज दिस हियर टू मेक दिस सर्कल टू हियर। मुझे यहाँ पे भी सेम सर्कल बनाना है 15 का। एक यूज EL एंटर देन आइसो एंटर। Take your center point. Okay. Here we got a center to center, and then I just track it center. Okay. How can we get track it the center? Okay, this is my center point. Okay, and then this is a 50. Okay. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये डेप्थ है, सर्कल शो करता है डेप्थ। ये सर्कल डालने से मुझे सर्कल नहीं दिख रहा। सर्कल को डेप्थ कैसे शो करोगे आप? इसकी डेप्थ मुझे पता है 10 है, क्यों? क्योंकि बाकी सब पे क्या है, 10 है, और ये सर्कुलर डेप्थ कितनी की है, 10। तो यहाँ पे 10 का होल है, यहाँ पे भी 10 का होल है। जाहिर सी बात है इसके आसपास है ना ऑब्जेक्ट क्लियर हो रही है। देन हाउ कैन वी शो दिस डेप्थ? फॉर दिस पर्पस व्हाट यू डू, select this object, what you do, just use a copy command, C or enter, select the center point, and then where you can also use this part, and then select your center and just copy it in the direction of down. How many distance is there? 10. Right? And after that, जो आपके पास आउटसाइड दिख रहा है उसे हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। राइट? आई ट्रिम इट, दिस, दिस एंड दिस एंड दिस। ओके। अब दिस इज लुक लाइक अ डेप्थ हियर and circular depth, and then this is look like your hole. Same thing do here. We can also do here. Just copy this command, CO enter first, enter, select, and then here use this 10 mm, right? And then what you do, GR enter, and then select this, and this, and this will be look like this point. Okay, this is proper way you can specify any object with your depth. Okay, circular depth मैंने बनाया, right? समझ में? Okay. अगर मैं कुछ और एग्जांपल देखूं जिसमें मुझे एक एग्जांपल मुझे मिलता तो चाहिए था, देख देते हैं। मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो आप बाकी एग्जांपल ट्राई करना। इफ यू हैव एनी इशू देन यू कैन आस्क मी आल्सो। मगर मुझे अगर कुछ अच्छा एग्जांपल मिल जाए जो फटाफट, हमारे पास 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स के अंदर जो बन जाए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, इसमें मेरे पास डिस्टेंस है सारी। ओके, चलो यही बना लेते हैं। ओके, फटाफट बन जाएगा मेरे हिसाब से तो। बस इसमें डायमेंशन अच्छे से होने चाहिए, डायमेंशन कभी कभार नहीं होते प्रॉपर। अगर आपने ऐसी चीजें बना ली ओपन इमेज, देखते हैं डायमेंशन है मेरे पास, है तो सही। चलो देखते हैं, गड़बड़ होगी तो देखा जाएगा। चलो आ जाओ, इसको भी बना के देख लेते हैं लास्ट। इसके बाद आप लोग खुद से करोगे सारे एग्जांपल्स। ओके, मैं इसके बाद सिर्फ वही बताऊंगा जो आपको जानना है। ठीक है, आ जाओ। ये डिस्टेंस मुझे सभी को दिख रही है, राइट? चलो मेक दिस टाइप ऑफ थिंग, तो मैं इसे बनाता हूँ सबसे पहले। I'll enter. I take this line here, 30 degree के along, 20. First of all, distance is your 20. After that, you take here is your distance is 28. Okay. Here you take here is your distance is 20 again. And then here downside you take here is a 20. Okay. Sorry, 28. Okay. Then you take here the distance is your 20. And after that, this distance is your 14. Okay. And what's the distance of this part? इसकी डिस्टेंस क्या है? तो दिस इज 75। ओके, तो बाकी सिस्टम हम बाद में बना देंगे। ओके, तो यहाँ तक तो फिर मैं अभी के लिए रहने देता हूँ। आगे एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे एक लाइन की ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज माई 75, राइट? ओके, दिस इज माई 75 आफ्टर इट। एंड इफ यू वांट टू मेक हियर, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस इज 60, राइट? इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60, राइट? एंड दिस डिस्टेंस जो 75, राइट? ओके, बाकी चीज हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। ओके, इसकी भी सॉरी, इसकी तो हम बाद में बना लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा है? स्पेस। मतलब यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है। तो सॉलिड को शो करने के लिए डेप्थ आप शो करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिस्टेंस यू नो अबाउट इज 14। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 14। मगर ऊपर की मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहा है उसे कर दोगे ट्रिप। तो आप यहाँ पे देखिए एक दरवाजा सा दिख रहा है मुझे, राइट? ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मेरी मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे ये कैसे बनाना है? हाउ कैन वी डू दिस थिंग? अब ये चीज कैसे बनाओगे आप? बाकी चीज तो हम बना लेंगे, टेंशन मत लो, हम ये भी बना लेंगे।
पहले हम इसे बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। 20 20 20। ये वी हैव द 28 रेडियस, मुझे पता है यहाँ पे 28 का रेडियस है, तो व्हाट यू डू, नोट आर्क, यहाँ पे हम आर्क यूज नहीं करेंगे, हम आइसो सर्कल यूज करेंगे। तो व्हाट्स वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज अ रेफरेंस लाइंस फर्स्ट, विच द रेफरेंस लाइंस हियर एनीवेयर, ठीक है। तो मुझे पता है 28 की डिस्टेंस है, या तो 28 यहाँ पे ले लो, एंड एक लाइन ड्रॉ कर दो 28 का, ठीक है। You get the 28, and then right here is E, I'll enter, and then I enter for iso circle and make the circle of your 28, right? The radius is your 28. And after this, what you do, just trim it. Which one you trim? This one, this one, this one, and this one. Okay? इसे भी हटा दो, इसकी तो अब जरूरत भी नहीं। And I don't want this part also. Then आप देख सकते हो मैंने क्या किया, this use a trim, right? अब मुझे इसी की कॉपी चाहिए, बस इसको उठाओ, एंड देन यूज सी ओ एंटर कॉपी कमांड। ओके, व्हाट यू आल्सो डू बाय यूज ऑफ दिस वे। ओके, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक मेक कर दिया, क्लियर। तो लो ये पार्ट रेडी, दिस पार्ट इज सो रेडी। ओके, एंड देन आई वांट टू मेक हियर इज योर 75 वैल्यू। ओके, तो यहाँ तक मुझे 75 का एक और बनाना है, राइट। तो व्हाट्स यू डू, तो आप ये कर सकते हो, एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ले लेना, बाद में से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ये भी टेक 75 रेफरेंस लाइन, राइट। एंड देन यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, एक 75 की लाइन और ड्रॉ करनी है, ताकि मुझे यहाँ तक मिल जाए, राइट, ठीक है। तो आप बाकी चीजें ट्रिम कर दो, जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस पार्ट, एंड देन आई डोंट वांट दिस पार्ट आल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहो तो आप इसे ट्रिम कर सकते हो, नहीं ट्रिम तो हो जाएगा वो वाली बात, ठीक है, चलो, ठीक है। यहाँ तक मैंने बना लिया, राइट। अब इसके आगे हमें बनानी है, क्या बनाना है इसके आगे, इधर वाली पार्ट को भी हम रेडी कर देते हैं। तो हाउ टू डू दिस, जस्ट इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जगह मिल जाए। एल एंटर, अब यहाँ से एक लाइन ले लो 75 की, ओके, राइट हियर इज 75, ठीक है। यहाँ तक आपने बनाया, देन दिस इज योर 17, कितनी 17 है ना, 17, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपके पास बन गया। ओके, और यहाँ से भी आपको क्या चाहिए, यू राइट हियर इज 20 डिस्टेंस, ये 20 डिस्टेंस है, ओके। एंड देन हियर मेरे पास इसकी है 14, ओके। तो आई यूज हियर इज 14, ओके। तो मैंने यहाँ पे 14 डिस्टेंस दे दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे 56 की लाइन बनानी है, क्या बनानी है, 56 की मुझे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, इलिप्टिकल सर्कल, ओके। जस्ट यूज दिस, तो हाउ टू डू दैट, एयर लाइन तक के पहले तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, राइट। कहाँ तक चाहिए रेफरेंस पॉइंट, बाय यूज ऑफ 56, क्योंकि सर्कुलर है तो मुझे इजीली पता लग जाएगा। एंड देन ऑल्सो राइट हियर इज 56, ओके। तो यहाँ से मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, तो सेंटर पॉइंट ही तो मुझे चाहिए। वी एल एंटर, आई एंटर फॉर आइसो सर्कल, ट्रेस दिस लाइन to down this direction, and then how many directions is 56, and then just make it by 50, right, here's a 56, all right, okay. And then what you do one thing, first of all is extend, मैं इसे extend कर देता हूँ, ठीक है। And then enter, and then after this trim this part, ठीक है, मैं इसे trim कर दिया, okay, यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे मुझे next line चाहिए, तो select this path, CO enter copy command, select this point to this point, okay, and then extra part जो दिख रही है उसे क्या कर दो आप, trim कर दो, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, राइट। चलो अब यहाँ तक तो आपके पास चीजें कैलकुलेट हो चुकी है, अब यहाँ पे बनाना है हमें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्टेंस है 38, तो एल एंटर फर्स्ट एंड देन राइट हियर इज 38, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे कितने बनानी है, 38 की डिस्टेंस पे बनानी है, राइट। एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 20, एंड नेक्स्ट स्मॉल सर्कल की है डायमीटर 20, ओके। चलो हम बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ओके। तो पहले तो टॉप फेस लेंगे, राइट। एंड देन सेलेक्ट EL एंटर, देन I एंटर फर्स्ट एंड देन सेलेक्ट हियर, एंड देन हियर यू कैन डू दिस पार्ट, एंड देन डिस्टेंस ले लो आप 20, ठीक है। एंड देन मेक द फर्स्ट सर्कल इज बाय यूज ऑफ 20 डायमीटर, एंड देन अगेन यूज द इलिप्स एंड देन आइसो सर्कल, एंड देन इसके बीच सेंटर डिस्टेंस से मुझे एक बनाना है ट्रेन का रेडियस, ठीक है। व्हाट यू डू, अब for this part we use L enter first,
एंड देन यहाँ से उठाओ एंड देन इसके टेंजेंट पोजीशन पे क्या कर दो, मैच कर दो इसे। कर दिया? ठीक है। ट्रिम कर दो इसे एक्स्ट्रा पार्ट को। लो बन गया ये एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब यहाँ पे बस मुझे एक लाइन देखनी है, ये 14 17 माइनस 14 कितने होंगे, और इसकी डिस्टेंस दी है क्या? ओके, इसकी डिस्टेंस इससे मैच हो रही है ना, तो दिस डिस्टेंस इज 60, 60 माइनस 75 कितनी होगी, 15। तो यहाँ तक तो ये 15 का बनेगा। और उसके बाद 17 माइनस 14 इज जो 3। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 3। ओके। अब यहाँ पे मुझे इसकी पॉइंट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम इसे लाइन कैसे देंगे, तो क्लिक ऑन दिस पाथ, क्लिक ऑन दिस पाथ ऑल्सो, एंड सी ओ एंटर कॉपी, एंड देन सेंटर पॉइंट आप सेलेक्ट कर दो इसे सेंटर पॉइंट से। ठीक है। एंड देन आपको बस नीचे की तरफ लेके जाना है, कितने की डिस्टेंस पे, 40 की डिस्टेंस, 14 की डिस्टेंस पे, बस इतना पाथ गए। ओके। और बस आप एक काम करना, गलत बन गया क्या, मैंने गलत बना दिया क्या? एक ये कॉपी लो, एक ये कॉपी लो, मेक दिस पॉइंट एंड देन मेक हियर टू राइट हियर इज अ 14 डिस्टेंस। ओके। चलो कोई नहीं, आप इसे डिलीट कर दो और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप स्ट्रेट लाइन। मैंने इसे स्ट्रेट लाइन एक बना दी, ट्रिम कर दिए इस पार्ट को भी और इस पार्ट। ठीक है। और बस यहाँ पे आप एक काम करोगे, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन को ज्वाइन कर दोगे, दिस इज योर क्वाड्रेंट पॉइंट एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट पॉइंट। ओके। एंड देन हियर यू यूज अ ट्री एंटर। ठीक है। ट्रिम कर दिया मैंने इसे, लो बन कर रेडी। ठीक है, वही सेम एग्जांपल मैंने करके बना के दिखा दिया, राइट? तो ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जिनके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक से बनाएंगे, जिनके पास वर्कबुक नहीं वो नेट से निकाल के ड्राइंग बनाए, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पार्ट? बिल्कुल मैंने काफी हद तक सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि मैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे बना सकता हूँ। एनी डाउट्स? नो? ऑल क्लियर? ओके गुड। ठीक है, तो यहीं तक हम आज के लिए रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।